Are we live? I hope we are. हेलो गुड इवनिंग गुड नाइट एवरीवन सब पहले गुड नाइट बोल दिया मैं अब तो सो जाना पड़ेगा अपने को या नो व्हाट दैट्स हाउ थिंग्स आर तो अब होता कुछ यूं है कि आई केम अक्रॉस फ्यू ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड फ्यू ऑफ द रिमार्केबल इंडिविजुअल्स जिन्होंने ये बोला है कि भाई ज्ञान देते हुए कि कैपिटलिज्म क्या होता है और कम्युनिज्म क्या होता है तो अभी रिसेंटली ये डिबेट वापस से पकड़ा है द डिबेट इज ऑन सो मुझे ख्याल आया आई हैड दिस क्वेश्चन कि हाउ वुड यू टेल पीपल व्हाट एग्जैक्टली इज कैपिटलिस्टिक सोसाइटी और अ कम्युनिस्ट सोसाइटी और अ सोशलिस्ट सोसाइटी और अ वेलफेयर स्टेट इन सब का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा एंड दैट्स वेयर फ्रैंकली स्पीकिंग दीज क्वेश्चंस आर हेल्ड बैक राइट तो लेट्स dwell into it and understand what exactly are the ideas and ideologies when we speak, right? So we have someone watching, I guess. Is there someone watching? Welcome. Okay, so this is a new series wherein we will discuss books, we will read books together and understand the basic ideas behind the concepts and the theories per se. तो क्या है ना कि लोग कहते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग करिए एनालिसिस कीजिए इसका ये मतलब नहीं होता कि यू नीड टू जस्ट गो टू गूगल आप गूगल पे चले जाओ और जो बकवास आप देखो उसको मान लो इसका थोड़ा सा अलग मतलब भी होता है तो आज हम उसी मतलब को एक्सप्लोर करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड okay. I forgot how to share screen. I just wanted to have this in, it's like on Instagram as well, but I couldn't have it. So yeah, is anybody listening to me? You can follow me on Meowwadi, right? You can just come and meet us over there. I mean, it's fun. It's pretty good place to be. Okay, let's get started. Let me check the screen if it is visible properly. Okay, fine. So we're gonna start with the nature and the causes of wealth of the nations. So we'll start with book 1, chapter 1. Now you're gonna understand आपको समझना होगा that this book is spread across several, I mean it's not one book but many books and has got many volumes, many parts and many chapters. इसके बहुत सारे volumes और बहुत सारे किताब ये culmination of books है. So let us start with what exactly. I hope सबको दिख रहा हो. I just hope it is visible. I just hope it is visible. Okay. So, of the cause and improvement in productive powers of labor and of the order according to which its produce is naturally distributed among different ranks of people. This is the book one. Now we will be dealing with chapter one of division of labor. इसमें कहते क्या है महोदय कहते हैं the greatest improvement in the productive power of labor and the great part of skill, dexterity, and judgment
with which it is anywhere directed or applied seem to have been the effects of the division of labor. Pretty much self explanatory, बट जिनको अंग्रेजी में समस्या होती है उनके लिए थोड़ा सा एक अनुवाद कि ये समकालीन उस काल के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जो भी प्रोडक्टिव पावर्स थे किसी भी मजदूर के, लेबर के या फिर संसाधन के, उनमें जो वृद्धि आई है वो डिवीजन ऑफ लेबर के चलते आई है। उनमें उनका जो ग्रेटर पार्ट ऑफ स्किल और डेक्सटेरिटी जो था, जो सुविधाजनक तरीके से काम करने की जो तरीका था और जो जजमेंट था, जजमेंट को आप किस तरीके से दीजिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ शायद ये फैसला लेने की बात चल रही है, वो उसका इफेक्ट यही था, उसका एक सेंसिबल इफेक्ट जो आया था वो डिवीजन ऑफ लेबर के चलते आया था। डिवीजन ऑफ लेबर होता क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब एक बहुत साधारण शब्दों में समझिए, काम को बांट लेना। ठीक है, यदि आप काम को बांट लेते हो तो आप अपना जो लेबर है उसको बांट दिया आपने, लेकिन ये किस बेसिस पर बटेगा? तो ये स्किल सेट के बेसिस पर बटेगा, है ना? तो इस तरीके से है। अभी इसके ऊपर आगे भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, विस्तार से इसमें बातें लिखी गई है। आराम से, बहुत लंबी किताब है, आपके साथ लंबे समय तक रहेगी। इट्स अ वेरी लॉन्ग बुक, इट विल स्टे विथ यू फॉर एवर। The effects of division of labor in general business of society will will be more easily understood by considering in what manner it operates. In some particular manufacturers, sorry, it is commonly supposed to be carried furthest in some very trifling ones. Not perhaps that it really is carried further in them than in other of more importance. But in those trifling manufactures which are destined to supply the small wants of but a small number of people, the whole number of workmen must necessarily be small, and those employed in every different branch of work can often be collected into the same workhouse and placed at once under the view of a spectator. In those great manufactures, on the contrary, which are destined to supply the great wants of great body of people, every different branch of work employs so great a number of workmen that it is impossible to collect them all into same workhouse. We can seldom see more at one time than those employed in single branch, though in such manufactures, therefore, the work may really be divided into a much greater number of parts than in those more trifling in nature. The division is not near so obvious and has accordingly been much less observed. To take an example, therefore, from a very trifling manufacture, but one in which division of labor has been very often taken notice of. द ट्रेड ऑफ अ पिन मेकर। अभी यहाँ से पूरा का पूरा काम हम लोगों का डिस्क्रिप्शन चालू होता है। एडम स्मिथ ऑब्जर्वेशन किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं? तो वो पिन मेकर जो है, या फिर शायद इसको हम जो कील बनाने वाला व्यक्ति है उसके मद्देनजर रख के बनाया गया है। पूरा का पूरा यहाँ पर कंक्लूजन वो इसके आइडिया के अनुसार लेकर के आ रहे हैं। अ वर्कमैन नॉट एजुकेटेड to this business, which the division of labor has rendered a distinct trade, nor acquainted with the use of machinery employed in it, to the invention of which the same division of labor has probably given occasion, could scarce, perhaps, with his utmost industry, make one pin in a day, and certainly could not make 20. अब एक व्यक्ति जिसके पास, मतलब एक साधारण व्यक्ति, एक आम क्या कहते हैं वर्कमैन जो है, जिसको कि इस ट्रेड के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, वो शायद एक पिन पूरे दिन में बना सके, यानी एक कील पूरे दिन में बना सकता है, लेकिन 20 तो नहीं बना सकता। बट इन द सेम वे इन विच दिस बिजनेस इज नाउ कैरीड ऑन,
Not only the whole work is a peculiar trade, but it is divided into number of branches, of which the greater part are likewise peculiar trades. वन मैन ड्रॉज आउट द वायर। तो अभी यहाँ पे देखिए वो जो नहीं यहाँ पे पिन बनाने की बात, वो शायद अपना सेफ्टी पिन ही मान के चलिए। तो वो ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये सेफ्टी पिन को लेकर के एग्जाम्पल क्या दिया है इन्होंने। तो इनका काम यह है कि इन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो कई छोटे छोटे और काम में बटा होगा जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है या फिर इक्वली सिग्निफिकेंट है उसके कंट्रीब्यूशन के लिए। इक्वली मतलब एक समानांतर तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। ठीक है। वन मैन ड्रॉज आउट द वायर, एक व्यक्ति उसमें से तार निकाल रहा है। अनदर स्ट्रेट्स इट, दूसरा उसे सीधा करता है। अ थर्ड कट्स इट एंड फोर्थ पॉइंट्स इट। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि तीन चार लोग हैं जो उन्होंने, जिसमें से एक का काम था तार निकालना, एक का काम था उसको सीधा करना, एक का काम था उसको काटना। ठीक है। और पांचवे का काम जो है, फिफ्थ ग्राइंड्स इट एट द टॉप फॉर रिसीविंग द हेड। पांचवा जो है उसमें केवल लगाने के लिए उसको धारी बना के रखता है। टू मेक द हेड requires 2 or 3 distinct operations. To put it on is a peculiar business. To widen the pins is another. It is even a trade by itself to put them into the paper. And the most important business of making a pin is in this manner divided into about 18 distinct operations. यानी एक केवल जो अपना सेफ्टी पिन है उसको बनाने का जो हमारे पास जो पूरा दारोमदार होगा वो 18 अलग अलग क्या कहते हैं प्रणालियों में बटा हुआ है। 18 अलग अलग ऑपरेशन है, which in some manufactories are all performed by distinct hands, though in other the same man will sometimes perform 2 or 3 of them. I have seen small manufactory of this kind where 10 men only were employed and where some of them consequently performed 2 or 3 distinct operations. But though they were very poor and therefore indifferently accommodated, excuse me, with the necessary machinery, they could, when they exerted themselves, make among them about 12 pounds of pin in a day. There are a pound there are in a pound upward of 4,000 pins of middling size. Those 10 persons therefore could make among them upward of 48,000 pins in a day. Each person therefore making a tenth part of 48,000 pins might be considered as making 4,800 pins a day. But if they had all wrought separately and independently and without any of them having been educated in this peculiar business, they certainly could not each of them have made 20 could not each of them have made 20, perhaps not one pin in a day. This is certainly not the 240th, perhaps not the 4,800th part of what they are at present capable of performing in consequence of proper division and combination of different operations. तो यहाँ पर हमारे कवि क्या कह रहे हैं, कवि का आर्गुमेंट ये है, कवि का कहना ये है कि जो भी हम लोगों ने एक आइडिया बना के रखा है, वट एवर द आइडिया ऑफ आर वॉज टू लुक इन टू दिस स्ट्रीम ऑफ थिंग्स, वो कैसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है कि हम लोगों का यहाँ पर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यहाँ पे काम कर रहे थे उनका काम बटा हुआ था। अगर यह काम नहीं बटा होता तो शायद वो एक आदमी पूरे दिन में एक ही बनाए, क्योंकि उसी को तार भी खींचना है, उसी को उसको सीधा भी करना है,
उसी को उसको काटना भी है, चौथे को मतलब उसी आदमी को चौथा रूप लेकर के उसको सीधा भी करना है, ताकि उस पे उसका वो हेड जो है वो लगा सके, माउंट कर सके उस पे। तो ये जो पूरी प्रणाली है इसको बांटा गया है अलग अलग क्षेत्रों में। ये जो बंटवारा हुआ है, दिस पर्टिकुलर डिवीजन दैट हैज अकर्ड, ये परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। दिस बूस्ट द परफॉर्मेंस, अ प्रॉपर डिवीजन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ their different operations. In every other art or manufacture, the effect of division of labor are similar to what they are in this very trifling one. Though in many of them, the labor can neither, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, the labor can neither be so much subdivided nor reduced to so a great a simplicity of operation. The division of labor, however, so far as it can be introduced, occasions in every art a proportionable increase of the productive powers of labor. The separation of different trades and employment from one another seems to have taken place in consequence of this advantage. This separation is too generally carried furthest in those countries which enjoy highest degree of industry improvement. What is the work of one man is rude state of society, in a rude state of society, being generally that of several in improvements. In improved society, the farmer is generally nothing but a farmer. The manufacturer is nothing but a manufacturer. The labor to which is necessary to produce one complete manufacture is almost always divided among great number of hands. How many excuse me, how many different trades are employed in each branch of linen and woolen manufactures, from the grower of the flax and the wool to the bleacher and smooth and the smoother of linen, or to the dyers and dress of the cloth. The nature of agriculture indeed does not admit so many subdivisions of labor, nor of so complete a separation of one business from another as manufactures. It is impossible to separate so entirely the business of a grazer from that of a corn farmer. The trade of a carpenter is commonly separated from that of a smith. तो आज के लिए हम इस पृष्ठ पर यहाँ पर अभी हम रुकने वाले हैं। अभी तक का आर्ग्यूमेंट क्या हुआ है? सबसे पहला ये कि डेक्सटेरिटी जो आई है, काम में सुविधा जो आया है, प्रोडक्टिविटी में जो बूस्ट आई है, वो किसके चलते आया है? डिवीजन ऑफ लेबर के चलते। डिवीजन ऑफ लेबर करता क्या है? वो एफिकेसी बढ़ाता है, इंसानों को ज्यादा काम करने की क्षमता में ला के रखता है, पहला। दूसरा, काम को बांट देता है, इन द सेंस कि काम को बांट दे, डिवीजन ऑफ लेबर का वही मतलब हुआ। यहाँ पर बेनिफिट क्या मिलता है उसका कि आपकी जो टोटल प्रोडक्शन वैल्यू है वो एनहांस हो जाती है कई बार। जहां पर एक आदमी शायद 20 या 30 क्या कहते हैं पिन बना रहा था, सेफ्टी पिन, वहां पर दिन में ये लोग 40,000 48,000 बना ले रहे हैं। कैसे बना ले रहे हैं? क्योंकि चार लोग हैं, क्योंकि चार अलग अलग काम कर रहे हैं, और इसकी रंगाई पोताई वगैरह अलग आदमी करेगा, तो एक आदमी के हिस्से एक ही काम आ रहा है जिसमें उसकी महारत उसको हासिल हो रही है। अब इसमें एक एग्जांपल देते हैं आगे बढ़ करके कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ संभव होता है? यह संभव होता है उन देशों में जहां पर थोड़ा सा डेवलपमेंट ज्यादा है, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, ये वहां पे ज्यादा प्रेवलेंट है बनिस्बत उसके जो कि अभी इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं है। तो आज हम इसी पर इसको खत्म करेंगे। वी विल एंड इट ओवर हियर, वी विल टेक इट अप द नेक्स्ट डे। आई डोंट नो इफ देयर इज समबडी वाचिंग, या देयर आर पीपल वाचिंग। आई होप इट इज यू। So by the virtue of it, we shall
say you goodbye. You can follow us always. You can like us. You can subscribe to us. You can share this. You can do whatever you want. Just do it. अब समझ में नहीं आता है तो लिख दो समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपकी फीडबैक है हम उसको बिल्कुल लेंगे। और सीखते रहो, सिखाते रहो, है ना? चलो, I'll just take I'll just go off the screen now. Good night, goodbye.